हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आपका लैब का सेशन है, तो हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर देखेंगे। लास्ट जो आपका सेशन था उसमें हमने बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या क्या टेस्ट लगाएंगे वो यहाँ पर हम सीख रहे थे। तो आज के सेशन में उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में आपने एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट लगाए थे और उनके लिए वीडियो भी आपने देखा था कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव आपका क्या था? अवर ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई the functional groups present in an organic compound through test for unsaturation, test for alcoholic group, test for phenolic group, test for aldehyde and ketonic groups, test for carboxylic group and test for amino group। ठीक है ना? आपको क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूहों की पहचान करना, और क्या क्या टेस्ट लगाएंगे उनके लिए। अनसेचुरेशन का टेस्ट लगाएंगे, अल्कोहलिक ग्रुप का लगाएंगे, फिनोलिक ग्रुप का, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और अमीनो ग्रुप का आप क्या लगाएंगे? वहां पर टेस्ट लगाएंगे। ओके, थ्योरी आपने पूरी देख ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके अलावा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया था। और कौन कौन से टेस्ट लगेंगे आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। ओके, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का प्रोसीजर देख लिया था, वीडियो देख लिया था। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना? इसका वीडियो आप लोग देख लेंगे, एनिमेटेड वीडियो, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, more compounds of sodium metal found into it. Color of tests for the functional group present in the organic compounds. Tests for unsaturation. Bayer's test. Add it to the test tube and shake it well. The disappearance of it is metal test 4 indicates unsaturation, otherwise it is saturation. Alcoholic group, sodium metal test. एल्कोहलिक टेस्ट में आप सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट को देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है अपनी लैब में। ओके, चलिए। Take a clean and dry measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown compound into it. Pour it into a dry test tube. Add a small amount of anhydrous calcium sulfate in it. Shake well. Place a funnel over a test tube. A filter paper is set into the funnel. Filter the solution into the test tube. Remove the funnel. Take small pieces of sodium metal using a forceps. Place it on a filter paper and dry it with another filter paper. Add 2 to 3 pieces of sodium metal into the test tube using a forceps. Alcohols react with active metals like sodium to produce effervescence due to the liberation of hydrogen gas. Ester test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the unknown compound into the measuring jar. Transfer it into another dry test tube. Take another measuring jar. Pour 1 ml of glacial acetic acid into it.
Pour it into the test tube. Take a dropper. Add 2 to 3 drops of concentrated sulfuric acid into the test tube. Warm the mixture in a water bath for 10 minutes. Add this mixture into 20 ml of cold water taken in a beaker and smell it. Alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form a fruity smelling compound called esters. तो ये वाली आपकी एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन है, जहां पर आप क्या कहते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। देखो आपको पता नहीं है कि वो जो कंपाउंड दिया गया है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, वो कंपाउंड को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स किया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं। और उसके बाद अगर एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड वहां पर फॉर्म होता है या उन दोनों को मिक्स करने पर एक प्लीजेंट स्मेल आती है, दैट मीन्स कि वहां पर एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब वो अननोन कंपाउंड आपका क्या रहा होगा, अल्कोहलिक ग्रुप वाला कोई कंपाउंड था। ओके A fruity smell indicates the presence of an alcoholic group. Seric ammonium nitrate test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown compound into it. Pour it into a dry test tube. Add few drops of seric ammonium nitrate reagent into it. Shake well. Alcoholic compounds on reaction with seric ammonium nitrate to give a red coloration due to the formation of alkoxycerium 4 complex. Acetyl chloride test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown liquid into it. Pour it into a dry test tube. Add a small amount of anhydrous calcium sulfate into it. Shake well. Place a funnel over the test tube. Place a filter paper in the funnel. Filter the liquid in the test tube. Remove the funnel. Add 2 to 3 drops of acetyl chloride into it. Take a glass rod and dip it in ammonium hydroxide solution. Bring the glass rod near the mouth of the test tube. Alcohols on reaction with acetyl chloride form esters and give out hydrogen chloride gas. The hydrogen chloride gives white fumes of ammonium chloride with ammonium hydroxide. Iodoform test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of the given unknown liquid into it. Pour it into a dry test tube. Take 1 ml of 1% iodine solution in a measuring jar. Add it to the test tube. Add dilute sodium hydroxide solution dropwise until the brown color of iodine is discharged. Warm the mixture gently in a water bath. Formation of yellow precipitate of iodoform indicates the presence of alcoholic group. Lucas test. Procedure. Take a small quantity of primary, secondary, and tertiary alcohols in 3 different test tubes. Using a dropper,
take a small quantity of Lucas reagent. Add a few drops of the Lucas reagent into tertiary alcohol. Tertiary alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Take Lucas reagent using the dropper. Add a few drops of it into the secondary alcohol and keep the test tube undisturbed for 5 minutes. Secondary alcohol reacts in about 1 to 5 minutes with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Again, take Lucas reagent. Add a few drops of it into the primary alcohol. Using a test tube holder, take the test tube containing primary alcohol. Heat the test tube over the Bunsen burner. On warming, primary alcohols react with the Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. जो ये अभी आपने अभिक्रिया देखी, ये आपने हेलो एल्केन के केस में भी पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो है आपके, वो किस तरह से रिएक्ट करके आपके हेलो एल्केन प्रोड्यूस कराते हैं, जो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड को प्रोड्यूस कराने की बात हो रही है। ओके, चलिए, तो ये आपके सारे एनिमेशन में आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं। एक बार आप रियल वीडियोस भी देख लेंगे इसके, जो अल्कोहल के लिए हैं। Tests for alcohols. Alcohols are organic compounds containing the hydroxyl functional group. They are formed by replacing the hydrogen atom of a hydrocarbon with a OH group. Alcohols are classified as monohydric, dihydric, and trihydric depending on the number of hydroxyl groups. They are further classified as primary, secondary, and tertiary according to the hydroxyl group attached to primary, secondary, and tertiary carbon atoms, respectively. Methyl alcohol and ethyl alcohol are the simplest alcohols. Our aim here is to identify alcohols using some simple tests. They are sodium metal test, ester test, steric ammonium nitrate test, acetyl chloride test, iodoform test, Lucas test. Sodium metal test. Materials required: organic compound, anhydrous calcium sulfate, sodium metal, test tubes, funnel, filter papers, spatula, and forceps. Procedure: take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of anhydrous calcium sulfate using a spatula. Shake the test tube well to remove any water content in the organic compound. Filter the contents into another clean, dry test tube. Now, take a small piece of sodium metal using the forceps and place it on a filter paper. Dry sodium metal by pressing it between the folds of the filter paper. Now, put the dry piece of sodium into the organic compound using the forceps. Alcohol reacts with active metals like sodium to produce effervescence due to the liberation of hydrogen gas. Ester test. Materials required: organic compound, glacial acetic acid, concentrated sulfuric acid, cold water, test tube, droppers, and water bath. Procedure: take a small quantity of organic compound in the test tube. To this, add a small quantity of glacial acetic acid using a dropper. Using another dropper, add a few drops of concentrated sulfuric acid to the test tube. Warm the mixture in a water bath for a few minutes. Now, pour the mixture into about 20 milliliters of cold water taken in a beaker and smell it by wafting. Alcohol reacts with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form a fruity smelling compound called esters.
Ferric ammonium nitrate test. Materials required. Organic compound, ferric ammonium nitrate reagent, test tube and a dropper. Procedure. Take a small quantity of ferric ammonium nitrate reagent using the dropper. Add it into the test tube containing a small quantity of organic compound. Shake the test tube well. Alcohol reacts with ferric ammonium nitrate to give a red coloration due to the formation of alkoxycerium 4 complex. Acetyl chloride test. Materials required. Organic compound, anhydrous calcium sulfate, acetyl chloride, ammonium hydroxide, test tubes, dropper, spatula, funnel, filter paper, and glass rod. Procedure. Take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of anhydrous calcium sulfate using the spatula. Shake the test tube well to remove any water content in the organic compound. Filter the contents into another clean, dry test tube. Using a dropper, add a small quantity of acetyl chloride into the compound. Shake the test tube well. Alcohol reacts with acetyl chloride to give hydrogen chloride gas. Now, dip the glass rod in ammonium hydroxide solution and bring it over the mouth of the test tube. The hydrogen chloride reacts with ammonium hydroxide to form white fumes of ammonium chloride. Iodoform test. Materials required. Organic compound, 1% iodine solution, dilute sodium hydroxide, test tube, droppers, and water bath. Procedure. Take a small quantity of organic compound in a test tube. To this, add a small quantity of 1% iodine solution using a dropper. Then, add dilute sodium hydroxide dropwise until the brown color of iodine is discharged. Warm the mixture gently on a water bath. When alcohol containing CH3CHOH group is warmed with sodium hydroxide solution and iodine, a yellow precipitate of iodoform is formed. Lucas test. Materials required. Primary, secondary, and tertiary alcohols, Lucas reagent, dropper, and water bath. Procedure. Take a small quantity of primary, secondary, and tertiary alcohol in 3 different test tubes labeled as A, B, and C. Using the dropper, add a small quantity of Lucas reagent into tertiary alcohol taken in test tube C. Shake the test tube well. Tertiary alcohol reacts instantaneously with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Then add a small quantity of Lucas reagent into secondary alcohol taken in test tube B and shake the test tube well. Secondary alcohol reacts in about 1 to 5 minutes with Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. Now add a small quantity of Lucas reagent into primary alcohol. Warm the test tube on a water bath. On warming, primary alcohol reacts with the Lucas reagent to form alkyl chloride, which being insoluble results in cloudiness in the solution. ये आपका एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गया था पूरा प्रोसीजर जो आपने देखा था। साथ ही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जिसके लिए आपने ल्यूकस टेस्ट लगाया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए, जहां पर आपने क्या बोला कि टर्शरी जो आपका अल्कोहल होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करते हैं, यानी तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, जबकि सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो 1 to 5 मिनट का समय लेते हैं, और जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, आपको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल तुरंत अभिक्रिया कर रहे हैं, सेकेंडरी थोड़ा समय ले रहे हैं, जबकि जो आपके प्राइमरी हैं उनको
गर्म करना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप के लिए आप लोग टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले लिटमस टेस्ट। प्रोसीजर क्या है? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ द गिवन लिक्विड और अ क्रिस्टल if solid on a moist blue litmus paper, ठीक है ना। आप moist blue litmus paper ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको डालेंगे, लिक्विड या सॉलिड जिस भी स्टेट में वो है। देन ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, नीला लिटमस पेपर आपका लाल हो जाएगा। इन्फरेंस क्या बताता है? प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यानी कि आपका फिनोलिक ग्रुप उपस्थित हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें आप क्या करेंगे, टेक अबाउट 1 ml of neutral ferric chloride solution in a clean test tube and add 2 to 3 drops of the given liquid or crystal if solid। ओके, क्या करेंगे आप, 1 ml आपका न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे एंड उसमें 2-3 ड्रॉप आप गिवन लिक्विड की डालेंगे। वायलेट कलर इज सीन, आपको वायलेट कलर सीन होगा, ऑब्जर्वेशन ये कहता है। और इन्फरेंस में क्या है, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यानी फिनोलिक ग्रुप आपका उपस्थित हो सकता है। नाउ Lieberman's test, take a small quantity of sodium nitrate in a clean dry test tube and add about 1 ml of the given liquid of crystal if solid. Heat the test tube very gently for half a minute and allow it to cool. Then add about 1 ml of concentrated sulfuric acid and shake the test tube to mix the contents. Okay, a deep blue or green coloration is seen, presence of phenolic group. देन क्या करेंगे, एड डिस्टिल वाटर केयरफुली टू द टेस्ट ट्यूब, कलर टर्न्स टू रेड, कलर आपका रेड हो जाएगा। और एड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। डीप ब्लू और ग्रीन कलर अपीयर्स, ठीक है ना, गाढ़ा नीला या हरा रंग आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आप ये टेस्ट लगाएंगे। देन थैलिन डाई टेस्ट है आपका, जिसमें कि टेक 1 ml of the given liquid in a clean dry test tube or crystal if solid and add 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. Heat the test tube for about 1 minute in an oil bath. Cool and pour the reaction mixture carefully into a beaker containing 15 ml of dilute sodium hydroxide solution. Pink color is seen, पिंक कलर आपको दिखाई देगा एंड प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ओके, ये भी आपको कंफर्म करेगा कि फिनोलिक ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप ये देखेंगे। Take the test tube containing primary alcohol. Take a small quantity of unknown solution. Test for phenolic group. Litmus test. Procedure. Take a small quantity of unknown solution using a dropper. Take a moist blue litmus paper. Drop 2 to 3 drops of it on a moist blue litmus paper. Carboxylic acid turns blue litmus red, indicating it is acidic in nature. Ferric chloride test. Procedure. Take a measuring jar. Pour 1 ml of neutral ferric chloride into it. Pour it into a dry test tube. Add 2 to 3 drops of given liquid into the test tube. Phenol on reaction with neutral ferric chloride gives a violet color due to the formation of a complex. Lieberman's test. Procedure. Take a test tube. Add 2 to 3 crystals of sodium nitrite into it. Take a measuring jar. Pour 1 ml of phenol into it. Pour it into the test tube.
Heat it gently for half a minute and allow it to cool. Take a measuring jar, pour 1 ml of concentrated sulfuric acid into it. Pour it into the tube. Phenol, on reaction with sodium nitrite in the presence of concentrated sulfuric acid, gives a deep blue or green colored product. Add water to it carefully. The blue or green color changes to red or brown color on treatment with water due to the formation of indophenol. Add excess of sodium hydroxide solution to the test tube. The red color again changes to blue or green by the addition of a strong alkali due to the formation of indophenol anion. Phthalene dye test. Procedure. Take a small quantity of phenol in a test tube. Using a spatula, take a small quantity of phthalic anhydride, add it into the test tube containing phenol. Take the test tube using a test tube holder. Using a dropper, add a small quantity of concentrated sulfuric acid to the test tube. Heat the contents of the test tube in an oil bath for about 1 minute. Pour the reaction mixture carefully into a beaker containing sodium hydroxide solution. On heating, phenol reacts with phthalic anhydride in the presence of sulfuric acid to produce phenolphthalein, which is colorless. Phenolphthalein gives pink color with an alkali such as NaOH. Test for aldehydic and ketonic group. 2. यहाँ पर आपने फिनोलिक ग्रुप के लिए टेस्ट देखे कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करना है। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में एक तो आपने अल्कोहलिक ग्रुप के लिए टेस्ट लगाया, दूसरा आपने फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट देखा कि किस प्रकार से लगाना है। सेम प्रोसीजर आपको अपनी लैब में भी फॉलो करना है। इसी प्रोसीजर से आपको अपने प्रैक्टिकल करने हैं। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।